A very good morning to all of you, and welcome to Prebell with William O'Neill India. So, not a good start for the day expected today. If you look at the Nifty's current setup, uh, this is still yesterday, so it looks very good. And in fact, yesterday we closed above 18,000 mark, which was very positive. I think one thing that we discussed about the last two sessions were these volumes. I think that were not very good, but yeah, it was just below the average, especially for the Monday. The volume was not that great. Now, the most interesting part, what you will be looking for today, is that where will it stop, right? So the first is the 10 EMA, the pink line over here. This level is the you can say important to watch, and that is somewhere around 825, right? So पहली चीज देखनी है मार्केट पे 825. If Nifty, though I know SGX is indicating around 800 level and all those things, but that's fine. But the first level to a knee-jerk reaction is for sure, right, guys? See, US inflation का expectation 8.1 का था, वो 8.3 का आया, ठीक है? तो वहां पे 4 to 5% का शार्प फॉल आया. So there will be a knee-jerk reaction in the Indian market as well. But what you need to look is how it rebounds after the knee-jerk reaction, what all stocks, how they are falling, volume कैसा है वहां पे, वो चीज देखना होता है. So first important thing to watch out for is 825 level, and the second one is the green line over here, that is 21 EMA, and that is somewhere around 710. So these are the two levels very important to watch today. And yes, I think this 21 EMA generally acts as a strong support in these kind of market conditions. But yes, the first, if from 825 it rebounds, then it is very, very good. It means we are in a very strong market. कि इतना ग्लोबल मार्केट खराब होने के वजह से भी we are rebounding from 10 EMA. But this level 21 EMA, that is also equally important, that is around 710. If these provides good support, then also it's fine. After that, there are no major level of supports. I think somewhere around 500 we found a good support for few days, so then that will be the next level of support. And yes, then an important support comes at the 400 level. So जो ये बड़ा कैंडल आप देख रहे हो, ठीक है, वहां का लो है 400. So that is the additional follow through day. जो हम follow through day 1.5% on a higher volume का concept जो देखते हैं ओनिल में, so ये additional follow through day था, and we don't want to close below that level. So that is important. But I think for today, these two levels you should watch for. And if market continues to fall after these levels, I think maybe tomorrow or even today, I don't know what happens. But yes, and then we come down to these two levels. However, there are chances that this might be a important one, 710. And I think after, what you need to look is how the way the market rebounds. अभी नीचे आया 2%, 3%, 4%, ये बात ठीक है, ठीक है. इतना बढ़ने के बाद यहाँ पे देखो, पहले ये बड़ा था, ठीक है, यहाँ पे बीच में छोटा कंसोलिडेशन था, ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से एक लंबा, relatively lamba, I'm not saying this lamba consolidation after such a good gain, and then again the market resumed the rally, and now it is possible that it might consolidate again at this place, right? So now the important part is the consolidation, and what you should look now is the stocks. So which are the stocks that are holding the key moving averages? So the stocks may be the part of your portfolio. अभी आज आपके पोर्टफोलियो में क्या देखना है कि कौन सा स्टॉक आपका लो वॉल्यूम पे गिर रहा है और की मूविंग एवरेजेस होल्ड कर रहा है. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट टुडे यू नीड टू लुक इन योर पोर्टफोलियो. सेकंड, there might be watch list stock, there might be few stock that you might be having in your radar. हाँ, ये मुझे ऐड करना है, ठीक है. तो उस स्टॉक में क्या देखना है कि क्या वो की सपोर्ट के अराउंड लाइक 21 डीएमए 50 डीएमए पे आज सपोर्ट ले लेता है, मे बी आज या कल, जो भी 1 2 दिन 3 दिन, जो भी ये मार्केट ऐसा रहा है, साइडवेज या फॉल कंसोलिडेट जो भी हो, ठीक है. तो वॉल्यूम क्या है तुम्हारे स्टॉक का जो तुम्हारे वॉच लिस्ट में है, और वो कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है. सो दीज आर द टू थिंग्स. एंड यस, इफ यू थिंक दैट यू हैव अ वेरी गुड प्रॉफिट,
and your stock is much extended from key moving averages, then according to O'Neill, if you are extended from base, there is no clear support like 7-8% तक कोई clean support नहीं है, and if you are getting a chance to exit at the upper range, then partial you might consider according to O'Neill methodology. अगर आप base से 20-25% ऊपर हो और जो सपोर्ट लेवल है वो काफी नीचे है, देन देर आर चांसेस कि जो भी ग्रोथ स्टॉक है, जो भी मोमेंटम में गए थे स्टॉक्स ऊपर, वो कंसोलिडेट करेंगे या फिर वहां पे एक बार नीचे आ सकते हैं. सो दीज आर द 3 सिनेरियोज दैट यू शुड लुक. बट सिर्फ प्राइस मत देखो, वॉल्यूम भी देखो कि एंड ऑफ डे वॉल्यूम कैसा है निफ्टी में, द स्टॉक्स दैट यू आर होल्डिंग, क्या वो फ्री फॉल पे है या वो रिबाउंड होने का चांस कर रहा है. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड लुक फॉर. एंड यस, अगेन लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स fresh joining here, so I will tell you, we discussed a lot about Nifty, but the key levels uh, to look are 710 around and 825 on the higher side. Okay. Now, some key news. If you see today, then KEC secured new order, then Hatson's board to consider fundraising, Harsha Engineering, the new IPO that is coming, it will be open for subscription today, and it has already raised the 22-25 crore through its anchor book. US inflation came at 8.3% above consensus of 8.1%. However, the inflation came slightly improved from that 40-year high. So this is important. जो trajectory है ना inflation की, देखो यहाँ पे मान लो 9.1 है, ठीक है. So this is the 9.1 point. तो फिर वहां से आया 8.5, ठीक है. तो उस टाइम हमारा एस्टिमेट था ग्लोबली, मतलब सबका एस्टिमेट था 8.7 and आ गया 8.5. So there was a strong rally on that day, and now it came 8.3. So trajectory तो अभी भी नीचे ही है, but expectation था 8.1 का. So that is why this knee-jerk reaction came in the US market. See, problem क्या है कि एक Fed ने clear कर दिया है, Fed के chairman has clearly told that we will be data driven, and they are trying to control inflation at higher, raising higher interest rate. So अभी क्या था कि सितंबर की जो एंड में मीटिंग है, 75% expectation, sorry, 75 bips expectation was already high. Some 65-70% probability of 75 bips of rate hike. So now it has almost touched 100% after this. And the problem is कि उसके बाद की जो मीटिंग है वहां पे थोड़ा कम एक्सपेक्टेशन था कि भाई वहां 50 बिप्स से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए आफ्टर सितंबर. बट आई थिंक आफ्टर दिस डेटा the probability of those rate hikes have also increased, and that's the reason for this knee-jerk reaction. Now the next meeting is time before that, a new again the inflation data of September will be out, and if you see that that is under control, then it will be again positive for the market. But yeah, the main reason around कि हाँ अभी soft landing हो पाएगा या नहीं, that question rises again. So when there are multiple higher rate hikes, it will be very tough for the US economy to digest it. And now the question will shift from to the economic growth, that if such a huge rate hike continues to come, then how will be the योर ग्रोथ इम्पैक्टेड. तो अभी सबके माइंड में यही है कि भाई अभी सॉफ्ट लैंडिंग तो थोड़ा दूर लग रहा है हमको, एंड देयर आर चांसेस कि चांसेस बढ़ गए हैं. आई एम नॉट सेइंग चांसेस, द प्रोबेबिलिटी हैज इंक्रीज्ड फॉर द हार्ड लैंडिंग. एंड yes, Ambuja Cement to consider fundraising on September 16. That's the other news. Now, global market update. Most of you might be knowing. I don't know how many of you were awake yesterday night and watching this. Like 4 to 5% fall. You see Nikkei Kospi 1 to 2% fall. Shanghai 0.7. So no more discussion over here. But yes, the 10-year yield. So वहाँ पे एक sharp increase हुआ है 10-year yield में. So that is also not something what the market always likes. So there was sharp yield in the sharp increase in the 10 years yield. And, yeah. So SGX Nifty, I took it somewhere around 833, this screenshot, and that was somewhere around 791.
So just below the our first level that we are looking for. So 800 825 के अराउंड हम पहला लेवल देखेंगे. तो 820-25 के अराउंड का, तो वहां से थोड़ा नीचे है, बट लेट्स सी हाउ द ओपनिंग इज. थोड़ा बहुत रिकवर होता है नीजर रिएक्शन के बाद, ओपनिंग पे रिबाउंड होता है, देन दैट इज टू बी वॉच आउट फॉर. Chart of the day, I think the defense theme, that is the Make in India theme, which is a bit less impacted, by these global turmoils or around the inflation, around the growth worries, is the Bharat Dynamics. So it's a very strong stock. If you can see, the last few quarter earning is very good, right? And what interesting is number of fund holdings. September 21 में सिर्फ 44 फंड्स इन्वॉल्व थे ये स्टॉक में, एंड विद इन अ ईयर अभी जून 22 में 106 stocks are 106 funds are holding this stock. So this is excellent. Look at the estimates. 23-24 का growth estimate देखो, 40% and 20%. So this is something very excellent. बाकी रेटिंग्स भी अच्छा है. ईपीएस थोड़ा वीक है, बट विद दिस रिकॉर्ड आई थिंक 1 or 2 क्वार्टर में ईपीएस इसका 70-80 पहुंच सकता है, लुकिंग एट द एस्टिमेट्स एंड द लास्ट 4 क्वार्टर्स ऑफ द ग्रोथ. सो फंडामेंटल इंप्रूव हो रहा है. लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा था. नाउ टेक्निकली इफ यू सी, यहाँ पे उसने स्टेज 2 कप विथ हैंडल बनाया था, देन अगेन दिस इज द स्टेज 2 कप बेस. ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, but it was not very successful, then failed breakout, but this is very good. Now you see यहाँ पे पूरा consolidate किया, लो वॉल्यूम पे कंसोलिडेशन था. ठीक है, उसके बाद 2 दिन बढ़ा, हाई वॉल्यूम पे बढ़ा. सो दिस इज व्हाट आई वांट यू टू लुक इन योर होल्डिंग्स or the potential, the watch list that you are having. So today you should look at this कि चलो गिरता है कोई बात नहीं है, बट वॉल्यूम क्या थे. यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी गिरा था, इसने 21 डीए में भी ब्रीच किया था. ठीक है, वॉल्यूम देखो बिलो एवरेज था. तो अगर बिलो एवरेज वॉल्यूम है, देन योर स्टॉक और द इंडेक्स विल फाइंड probability that it will find support at a certain level is high. ठीक है, यहाँ पे हाई वॉल्यूम पे अगर गिरा होता ना, तो सपोर्ट लेना आई थिंक वाज नॉट. सी ओवर हियर, जैसे कि यहाँ से स्टॉक गिरना शुरू हुआ, तो यहाँ पे देखो हाई वॉल्यूम था, तो उसके बाद उसने सपोर्ट नहीं लिया, सीधा शार्प फॉल लगा के 50 डीएमए पे सपोर्ट लिया. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या था कि वॉल्यूम इतना हाई नहीं था, वॉल्यूम वाज रिलेटिवली लोअर इन दीज 3 days. यहाँ पे 2 दिन, यहाँ पे 3 दिन. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से इज दिस इज अ पॉजिटिव सेटअप for the stock, and I think when market sets well, और यहाँ पे अगर मोमेंटम आता है, अगर प्राइस बढ़ता है along with the volume, so you don't want only price action, you also want volume action. If you see both the action, and this could be the part of your watch list, it's at the pivot, so let it give a chance to break out on a higher volume, and then look out for the stock. But yes, overall the fundamental, the growth driver, जो इसका सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, अभी उसका नया जो प्रोग्राम आ रहा है, आई थिंक यू माइट बी नोइंग अबाउट दिस आकाश मिसाइल प्रोग्राम, अस्त्र मिसाइल प्रोग्राम. ठीक है, 100 बिलियन INR का इसका ऑलमोस्ट ऑर्डर बुक है. सो दिस इज वेरी ह्यूज ऑर्डर बुक. सो आई थिंक वो जब एग्जीक्यूशन फेज में आएगा ऑर्डर बुक उनका, तो डेफिनेटली उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी बढ़ेगा, एंड दे विल बी एबल टू मेंटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ बॉटम लाइन. सो वेरी गुड सेटअप, वेरी गुड स्टोरी. एंड यस, दिस इज अ डोमेस्टिक स्टोरी, एंड देयर आर चांसेस कि जो इंटरनेशनल टर्मोइल है उसकी वजह से कम इम्पैक्ट हो इस पे. सो thanks for joining, guys. Thoda extended tha, but yes, there were few things to discuss today, I think, which a lot of you wanted to discuss. So thanks for joining the session. So again, I will join at 4:30 after markets. So you please join at 4:30 again. We will discuss about how the market went today and what you should look for now in the evening session. So thank you for joining.